Hello everyone, very good afternoon, and I am Dr. Neelam Benara, Senior Consultant, Kailash Hospital and Neuro Institute, Sector 71, Noida. Today we are going to discuss a very important topic in front of all of you. This is cervical cancer. What is cervical cancer and what are the causes? Why does it happen to the patients? And what are the pre-cancerous stages? What is the vaccine which can be given to prevent this cancer? Dr. Megha. Good afternoon, everyone. I am Dr. Megha Tiwari, consultant gynecologist at Kailash Hospital Noida. Thank you, ma'am. As the government of India has also endorsed upon the importance of HPV vaccine, so I take this opportunity to create an awareness as well as educate each and every one of our viewers regarding the cervical cancer screening, its prevention, and most important, vaccination. You would be surprised to know that in the year 2020, there were about 6 lakh cases of cervical cancer diagnosed worldwide. And more amazingly, you would be amazed that about 1/4 of the burden of cervical cancer worldwide is shared by India. So about hearing about the enormity of this cancer, it is important that we get ourselves aware and educated about its same. So because of this vast cervical cancer incidence worldwide, the WHO started an initiative, which is a global initiative to eliminate cervical cancer by the year 2030. It's an enormous task, but according to this, about its target is to about 90% of the target population or the eligible girls to be vaccinated. 70% of these screening has to be done among the target population, and 90% of the girls or women who have been diagnosed with a precancerous condition or who have a cervical cancer lesion, they have to be treated accordingly. Now, having known about the enormity of this disease and its spread, how is it caused and why are we so emphasizing about its awareness? Because it is one of the cancers which has, it can be prevented. Now, what is the causative agent? It is the human papilloma virus. Again, it's a virus, and with this virus, it is a DNA virus, and it has the propensity to be infecting the various parts of the body, mostly the oropharyngeal part, and again the vagina, the vulva, the cervix, as well as the anal part and also the penile part. So it not only causes cervical cancer, it has also the ability to cause various other cancers, though the incidence and its causative percentage is varied from each type of cancers. Now, HPV virus, it is not a one type. There are about 100 variants of this virus. And of it, only 40% have the ability to cause the cancer, but the rest do also cause anogenital warts. And some also have the ability to cause some warts in the respiratory region. Now, the HPV virus, it has some low risk variants, it has some high risk variants. And the low risk variants has the propensity to cause the warts. The high risk ones, mostly HPV 16 and 18, has the ability to cause the cancers that we are going to discuss. Now, these each person, individual who is sexually active can be infected by the HPV virus. But that does not mean that every time you are infected by an HPV virus, you will end up having cancer, because our body's immunity is quite strong and it has the ability to wash it off. So if a person is exposed to an HPV virus, about 70% of it will be cured in the first year, and the body's immunity fights, and so the 90% also gets cured in the next year. But then why are we still emphasizing that you need to be vaccinated? Because it is the repeated insult by the high risk variants of the HPV virus, which is mostly 16 and 18, which repeated infection by this high risk variant can cause cervical cancer. And how long is its incubation period? It can vary from 1 year to 10 years if it's a precancerous lesion, and it can vary more further till to cause a cancer lesion. So we are trying to bring in about a primary prevention by the vaccination, and a secondary prevention by the screening, which during our talk you will gradually know how it is being about. Now, what are the cancers that it can cause? It can cause a 90% of 90 to 100% cervical cancers are because of the HPV virus. It has also the ability to cause the penile cancer, again 70 to 90%, the anal cancer, the same percentage, and also the vaginal vulval cancer and the oropharyngeal cancers.
So with having done about the HPV virus incidence, what are our predisposing factors? Which ones are the high-risk ones which could lead to cancers? So early sexual activity. The early incidence of sexual activity is a high-risk factor for developing precancers or cervical cancers. Again, multiple sexual partners could be one of the reasons that would lead to high incidence in among them to be infected by the HPV virus. Then having multiple deliveries, that is grand multipairs who have multiple deliveries, they are one of the risk factors. Immunocompromised status of the patient, HIV or any other disease which could immunocompromise a patient's immunity, because that is what is going to fight against the virus. They are at high risk for developing the cancer. It has been seen that the contraceptive pills, if it is a long-term use of contraceptive pills, may predispose the person to having the cancer, but as soon as the contraceptive pills intake is stopped, you revert back to the normal population incidence. Then there is another thing that we want to educate by this platform. Using of only barrier contraception, that is condoms, does not prevent totally the cervical cancer, because there are other pathways where it can be transmitted or which is exposed and which cannot be used by the condoms, cannot prevent their exposure. So condoms not completely, but does prevent STDs and to some extent the infection by the HPV virus. After this, with this information, we would now go what are the signs and symptoms and the stages regarding this cervical cancer. So signs and symptoms are heavy prolonged menstrual bleeding and bleeding in between menstruation, bleeding after menopause, and if there is bleeding after intercourse, and if there is heavy, dirty, foul-smelling discharge, this may also cause cancer. And if there is bleeding in between the menstruation, sometimes patient may feel heaviness in the pelvis and pain during intercourse, and pain and weight loss and fatigue. These are the symptoms. If the one is having these symptoms, she should go to gynecologist and confirm that is there any problem inside. Now we come to the staging of the cervical cancer. There are 4-5 stages. One is precancerous stage. In this stage, the cervical, what is cervix? Cervix is the mouth of the uterus is called cervix. Cervix, we can divide it into two parts, exocervix and endocervix. Usually the cancer happens in outer part of the cervix, which is called ectocervix. Here it is covered with the squamous epithelium cells. So this is called squamous cell carcinoma. And जो inner part of the cervix होता है, that is called endocervix, and the cancer in the inner part of the cervix is called endocervical carcinoma, right? So usually this cancer happens at the transformation zone. What is transformation zone? It is the part where the endocervix and exocervix meet. This is called transformation zone. So usually the cancers start from this zone. And now there are 4 more stages, stage 1, stage 2, stage 3 and 4. Stage 1 में क्या होता है कि the cancer is confined to the cervix. It does not go up in the uterus or lower in vagina. But in stage 2, the cancer extend into the uterus and in lower vagina, but does not extend into the lateral pelvic wall. In stage 3, the cancers extend to the lower part of the vagina also and in the lateral part of the pelvis. And it may cause pressure on the ureters and also may cause problems in the kidney also. And stage 4 is the last stage, where the cancer जो है बिल्कुल from the pelvis it is going out. So this is stage 4. इसमें क्या होता है कि urinary bladder की smooth muscles में भी चला जाता है and it may go into the rectal smooth muscles also. So these are the staging of the cancer. Now we come to the vaccine, right? So vaccine is HPV vaccine, because Dr. Megha already told you that the cancer is usually occurs due to the HPV virus, human papilloma virus. So there is a vaccine to prevent this cancer. We call it HPV vaccine.
There are 4 types of HPV vaccine in India. One is Cervarix, which is from the GSK, but it is no more used in India now, and this is bivalent vaccine. Bivalent का मतलब होता है कि this acts against the 2 variants, 16 and 18. है ना, 16 and 8, as डॉक्टर मेघा ने पहले ही बताया कि 16 and 18 वैक्सीन जो होते हैं वही सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वही करते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो जो सर्वरिक्स है उसमें यही दोनों वायरेंट्स के अगेंस्ट ये काम करता है। दिस इज बाइवेलेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, बट सर्वरिक्स विच इज मेड बाय जीएसके इज नो मोर यूज्ड इन इंडिया। नंबर 2 इज गार्डासिल। गार्डासिल दिस इज क्वाड्रिवेलेंट। तो इसमें ये दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट 4 वेरिएंट्स, दैट इज 6, 11, 16 and 18. And then nonavalent is also Gardasil 9. This acts against 9 variants of HPV virus. 6, 11, 16, 18, 31, 32, 45, 52 and 58. ये सब वेरिएंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट ये काम करता है। And the last but not the least is the vaccine which is made in India is Cervavac. This vaccine is also quadrivalent and it is also acting against 6, 11, 16 and 18. 16 and 18 is important variant for causing cervical cancer. So Cervavac is used for boys and girls both in from age of 9 to 26. 9 to 26. So this is very important vaccine. It is made in India by Serum Institute of India, and this is we should promote this vaccine here. Then Gardasil. Gardasil, so I have already told. Gardasil 9, Gardasil 4, we should use. Gardasil, quadrivalent Gardasil can be used in from 9 to 14 years. We use 2 doses for when the girl or boys, they are 9 to 14 years, we use 2 doses, and when she or he is more than 14 to 26 years, we use 3 doses, and more than 26 to 45 years also we use 3 doses. And for girls and boys 9 to 14 years, we use first dose on 0 day, and second dose is at least 6 months apart. And in 15 to 26 years, we use 3 doses, that is 0. Then second dose is either 1 or 2 months apart, or third dose again after 6 months. And after 26 to 45 years, we use 3 doses, 0, 1 to 2 and 6 months. But during this period also, we have to go on doing screening test also. ये नहीं सोचना है कि हमने वैक्सीन ले ली है तो स्क्रीन टेस्ट नहीं कराना है, स्क्रीन टेस्ट जरूर कराना है। We can avoid screen testing in those who have already taken at the age of 9 to 15 years. उनमें स्क्रीनिंग नहीं कराएं तो चलेगा, बट अगर एज ज्यादा हो गई है उसके बाद वैक्सीन लिया, देन तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करानी जरूरी होती है। एंड what about in pregnancy? Do you recommend the vaccination? Yeah, we don't use vaccine during pregnancy, but if we have taken, if somebody has taken vaccine prior to pregnancy, first dose she has taken, and then for second dose, before the second dose she become pregnant, so we cannot give vaccine in the pregnancy, but we don't allow the patient to go for abortion. मतलब abortion करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 डोज ले लिया तो उसके बाद उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, एंड डिलीवरी के बाद उसको सेकंड थर्ड रिपीट कर सकते हैं डोज पूरी। And what about breastfeeding? Yes, breastfeeding is the best time to take vaccine. As soon as we deliver the patient, we should ask every patient after delivery, if they have not taken vaccine, they should start vaccine just after delivery. Within I think within a month we can start vaccination. So after delivery it is good time to take vaccine, because she will not get pregnant within at least 9 months. So we should start vaccination at least 6 months, she will not get pregnant.
मैम अगर कोई 26 ईयर्स से ऊपर है और वैक्सीन लेना चाहता है, स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है? यस, 26 से ऊपर है और वैक्सीन लेना चाहता है, फिर भी एक स्क्रीन रिकमेंडेड होती है। बस केवल अगर 9 मंथ से, जब तक कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई है, उससे पहले अगर उसने वैक्सीन ले ली है तो हम स्क्रीनिंग नहीं करें तो चल सकता है। बट वंस द गर्ल और लेडी इज सेक्सुअली एक्टिव एंड उसने वैक्सीन ली है, फिर भी हमें स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। तो टू प्रिवेंट कार्सिनोमा सर्विक्स, screening is very very important, and vaccination so we will give definitely. What else you want to know? Let's talk about screening. Yeah. There is a part remaining about screening. So जो अभी मैडम ने बताया है, that is the primary prevention. Vaccination against cervical cancer is a primary prevention. What I am going to talk about now is screening, जिसके लिए आप अपने clinician, अपने gynecologist को approach कर सकते हैं in the hospital setting. Now, India में screening is not still a part of a national program, but what the FOXI, जो India की जो Gynae Association है, they have recommended certain good practices जो हम अपने practice में आप सबको suggest करते हैं करने के लिए। तो अब depend करता है, screening जो है वो 3 तरह से हो सकती है। एक है cytology, जो बहुत फेमसली आपको पता है पैप स्मीयर, वो पैप स्मीयर भी हो सकता है, एंड देयर इज अनदर वन व्हिच इज नोन एज LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये एक वे ऑफ स्क्रीनिंग है। सेकंड इज द स्क्रीनिंग ऑफ द हाई रिस्क HPV वायरस को डिटेक्ट करना, जिसको हम HPV DNA टेस्टिंग करते हैं, वो एक वे ऑफ स्क्रीनिंग है। एंड दी अदर, जहाँ पे लो रिसोर्स सेटिंग है, इंडिया बीइंग स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज अ लो रिसोर्स सेटिंग जहाँ पे जो मीन्स है उस तरीके से हम स्क्रीन कर सकते हैं। सो देयर इज VIA which is a visual inspection by acetic acid. Now इन सब का जो इंसिडेंस है, जो इनका सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, अगर हम हाई रिस्क HPV DNA को टेस्ट कर रहे हैं, इसका सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, इट हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द वायरस। अगर किसी को रेकमेंड करना है, अगर इफ यू हैव द अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग, देन द फर्स्ट लाइन वुड बी द HR-HPV। इसमें हम जो हाई रिस्क HPV DNA जो है वेरिएंट्स है उनको स्क्रीन करते हैं, एंड इफ यू आर बीइंग स्क्रीन्ड बाय दिस प्रोसेस, देन आपको अपनी स्क्रीनिंग का इंटरवल, मतलब नेक्स्ट स्क्रीनिंग आपको बाय 5 इयर्स के इंटरवल में कर सकते हैं। और अगर सिर्फ किसी को 2 ही बार करना है, दैट इज योर मीन्स दैट इज अवेलेबल फॉर यू, then at least twice in a lifetime at the age of 35 and the another at the age of 45. This I am talking about is the HR-HPV. This is one method. The other way is to do a cytology, that is pap smear या liquid based cytology. अगर कोई person, a female, जो स्क्रीन करवा रहा है अपने आप को, and the screening should start once the sexual activity हो रहा है या from 25 years onwards. इसके जो साइटोलॉजी से किया जा रहा है, ये एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 5 years होता है, recommended है 3 years is a good practice, कि every 3 years you have to screen yourself by using a pap smear, जहां पर हम सर्विक्स जो होता है, यूट्रस का माउथ सर्विक्स, उसके अंदर जो डिस्चार्ज जो फ्लूइड है उसका ब्रश से या स्क्रैप करते हैं, एंड देन दिस इज बीइंग टेस्टेड। सो दिस हैज टू बी डन एट द इंटरवल ऑफ 3 years. And the next is the VIA. In a low resource setting, हम एक acetic acid करके एक medium होता है, it is just painted over the cervix, and visually we analyze the findings of the cervix, and then accordingly we grade whether it is a VIA positive or whether it is a VIA negative. So accordingly उसके बाद the further management depends. Now during these screening processes, which could be cytology, pap smear, LBC or HR-HPV or VIA, अगर कोई प्री कैंसरस लीजन मिल रहा है या यू आर सस्पेक्टिंग अ कैंसरस लीजन, यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Your gynecologist, your clinician is going to educate you regarding the what are the next methods, whether you should go again for the HR-DNA or you should go for colposcopy or you should have a colposcopy guided biopsy. These are the other tertiary prevention. This is another level of treatment. So अभी हम discuss कर रहे primary and secondary. And if something like that is diagnosed, then further treatments are available. It is easily available. One has to find the right place to go. Okay. Thank you, Dr. Mahesh sir. इस दवाई के, आपने पूछा है सर कि इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या, तो इस दवाई के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है,
बहुत ही मामूली से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि लोकल जो हाँ हमने इंजेक्शन लगाया है उस जगह थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ सकती है, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, समटाइम्स सम हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा नोजिया हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसको ले सकता है सर। नेक्स्ट, how long can a person live with cervical cancer? If you have taken a proper treatment, so you can take your own full life. If you have taken the treatment in right time, then you will live your whole life. And if I may add, it also depends upon the stage of the cervical cancer. Yeah. आप कौन से stage में treatment ले रहे हो? Correct. The 5-year survival will depend on that. At what age vaccination to be done? I told you that the vaccination is to be done right from 9 years. If the girl or boy is at 9 years, 9 years से 15 साल के बीच में फर्स्ट डोज 2 डोजेस का कोर्स होता है केवल। अगर हमने 9 से 15 के बीच में लगा लिया तो 2 डोज लेनी होंगी। पहली डोज 0 डे हो गया जैसे आज लगाया, फिर सेकेंड डोज उसकी 6 महीने का के बीच में लगा देते हैं, है ना? तो इसलिए I could add, जो स्क्रीनिंग है जब हम चालू कर रहे हैं 25 साल तक, तो कब तक हमको स्क्रीनिंग कंटिन्यू रखना है? हमें स्क्रीनिंग कंटिन्यू रखना है टिल 65 इयर्स ऑफ एज। और जो भी मेथड हम यूज करें फॉर द स्क्रीनिंग, 65 इयर्स पर हम स्क्रीनिंग स्टॉप कर सकते हैं तभी जब हमारे पिछले जो पैप्समियर है या हमने HRDNA से डायग्नोज किया है, अगर वो पिछले 3 इन लास्ट 10 इयर्स नेगेटिव आते हैं तो वी कैन स्टॉप द स्क्रीनिंग beyond 65 years of age. After you have been sexually active and उसके बाद आपने अगर वैक्सीनेशन दिया है, वैक्सीनेशन इज नॉट गोइंग टू क्लियर द डिजीज, ये प्रिवेंट करेगा फर्दर इन्फेक्शन से, एंड बट उसके वैक्सीनेशन के बियॉन्ड भी स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड। दैट इज द टेक होम मैसेज। यू डू नॉट स्टॉप स्क्रीनिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, you continue the screening till you are 65 years of age. This is the message that we want to put across. And as clinicians, we take this initiative every time a patient comes to our OPD and giving us the symptoms जो मैडम ने सर बताए हैं क्या signs and symptoms है, to screen yourself. Screening is, and we know prevention is better than cure. So we need to be screened and we need to be vaccinated. And especially both boys and girls, because अगर गर्ल्स वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स वो इंसिडेंस बॉयज में भी कम हो जाता है ऑफ द मैलिग्नेंसी जो उन्हें हो सकती है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है, डियर डॉक्टर प्लीज टेल अस डोज HPV वैक्सीन इज इफेक्टिव फॉर पेशेंट अबव 40 years as well as postmenopausal. Yes, it is. This HPV vaccine can be taken up to 45 years, right? बट अगर आपने 40 इयर्स में वैक्सीन लिया है तो इसका मतलब फिर यह है कि आपको स्क्रीनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी डॉक्टर मेघा ने बताया कि सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन फर्स्ट डोज अगर आपने 40 इयर्स पे लिया है, देन स्क्रीनिंग कंटिन्यू रखिए। अगर उसमें सब कुछ ठीक रहता है तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। कैन अ गर्ल हैज हर फर्स्ट HPV वैक्सीन? हाँ, ऑफ कोर्स 15 इयर्स पे तो ले ही सकता है। 9 इयर्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 9 से 15 के बीच में 2 डोज लेनी होती है, लेकिन अगर 15 से बड़ी है बच्ची तो फिर उसको 3 फुल डोज लेनी पड़ती है, जो कि एक फर्स्ट डोज 0 डे पे लेनी होती है, सेकेंड डोज 1 और 2 मंथ अपार्ट फर्स्ट डोज, देन थर्ड डोज पहली डोज के 6 महीने बाद लेनी होती है। तो ये तीनों डोज लेनी पड़ेंगी अगर बच्ची 15 साल से बड़ी है तो। कैन सर्वाइकल कैंसर बी क्योर्ड कंप्लीटली? यस, जैसा कि अभी डॉक्टर मेघा ने बताया, इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर। इफ इट इज बिल्कुल बहुत एक्सटेंड हो चुका है देन तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर अर्ली स्टेज में, जैसा कि डॉक्टर मेघा भी बोली है कि जितना स्क्रीनिंग वगैरह कराएंगे हम बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे उतना जल्दी हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक है वो इसी पर है कि आप मैक्सिमम अपना स्क्रीनिंग कराएं और स्क्रीनिंग के साथ साथ ये HPV वैक्सीनेशन जो कि इसके प्रिवेंशन के लिए वो जरूर लगवाएं। प्लीज रिपीट वैक्सीनेशन नेम्स। 4 तरह के वैक्सीन है इंडिया में। एक होती है सर्वरिक्स जो कि GSK की बनी होती है, बट आजकल इंडिया में उसको नहीं लगा रहे हैं। इंडिया में जो मेन लग रही है वो है गार्डेसिल। गार्डेसिल 2 तरह की होती है, गार्डेसिल 4 जो कि क्वाड्रिवेलेंट होती है, एक होती है गार्डेसिल 9 जो कि नॉनवेलेंट होती है, इसमें 9 वेरिएंट्स के अगेंस्ट वो काम करती है। चौथी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अभी इंडिया में ही बनना शुरू हुई है, जिसको सर्वावैक कहते हैं,
ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगाते हैं 9 इयर्स से लेके और 26 साल के लड़के और लड़कियां दोनों को लगती है ये। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। अगर 9 से 26 के बीच में अगर लगवा लेंगे तो मेरे ख्याल से काफी परसेंटेज चांस कम हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और जो भी अदर कैंसर्स हैं जो इन वेरिएंट से होते हैं उन सबके होने के बहुत ही कम चांस हो जाएंगे। राइट मेघा? राइट। तो ये जो सर्वावैक है जो इंडिया का है, इट इज रिकमेंडेड टिल 26 years. So why 26? Because the studies have just started. Yes. And for our viewers, अगर मैम ऐड करेंगे कि boosters अभी as of now we don't know whether booster is recommended or not, because इनकी सारी studies होती है, एक time frame होता है about these vaccines. Yes. So yes. you have to contact your clinician जिससे आपने दिया या anybody whether booster is available. जब available होगा one has to go and take it. अभी जो guidelines है वो इतने ही vaccine का है. Now the question is, what should we do if we are diagnosed with cancer? If you are diagnosed with cancer, तो सबसे पहले ये मालूम करना है कि आपकी स्टेजिंग कौन सी है, किस स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है। अगर ये प्री कैंसरस है तो फिर बहुत सारे इसके तरीके होते हैं ट्रीट करने के, जिसमें कि हमें यूट्रस भी नहीं निकालना पड़ता, जिसको हम बोलते हैं सिन। सिन का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू मतलब कि जहां कार्सिनोमा है वहां पे जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं कन्फाइंड रहती है, वो उसमें आगे अपने नियर बाई टिश्यू को भी इन्वॉल्व नहीं करती है। तो उसको हम हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं, हाइपरप्लेशिया ऑफ द टिश्यूज ना। तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो गया है, सिन बोलते हैं इसको, तो इसमें हमें इवन यूट्रस निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। कई सारे तरीके हैं जिसमें उस पार्ट को एब्लेश कर देते हैं या उसको वो कोल्ड से हम लोग उसको बर्न कर देते हैं, और भी कई तरीके हैं जो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू गो टू योर क्लिनिशियन, शी विल टेल यू। एंड अब स्टेज 2 और स्टेज 3 में है। स्टेज 2 में है तो हम सिंपल अपना यूट्रस निकाल के भी उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3 में आ गया है पेशेंट, जिसमें कि अपना पूरा वेजाइना भी इन्वॉल्व हो गई है और लेटरल पेल्विक वॉल भी इन्वॉल्व हो गई है एंड लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे में फिर हमें सर्जरी से पहले उसमें कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों को कंबाइन करके उसको ट्रीट करना होता है। एंड स्टेज 4 में तो शायद सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, तो उसमें फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ही उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। Is cervical cancer genetic, mean by birth? Then what are the symptoms? So it is not genetic. See, it is not genetic at all. दो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, डेफिनेटली आप अपना स्क्रीनिंग और ज्यादा, बिकॉज यू आर नाउ प्राइम की देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो आप अपना स्क्रीनिंग और प्राइम्ड होके यू वुड प्रॉब्ली डू इट एट मोर रेगुलर इंटरवल, यू विल टेक द वैक्सीनेशन. But genetic implications still not any studies have suggested. But screening becomes very important here. Even if it is predisposed, how would you prevent yourself from getting one is by vaccination and by screening. So the whole idea is to early detection and early treatment. What else they are asking? How is genital wart related to HPV vaccine? So there are few variants of HPV variants जो है, जिसको हम लो रिस्क वेरिएंट्स बोलते हैं. वो लो रिस्क वेरिएंट्स कॉजेज जेनाइटल वॉट्स, एनोजेनाइटल वॉट्स. नाउ एनोजेनाइटल वॉट्स ऑफ कोर्स वो मॉर्बिडिटी पेशेंट की इंक्रीज कराते हैं, बिकॉज वहां पर जो वॉट्स है वो कैन बी रिमूव्ड बाय वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल व्हिच यू कैन अप्रोच द हॉस्पिटल एंड दे वुड डू द नीडफुल. एंड दूसरा है, देयर इज अ वेरी रेयर एंटिटी की वॉट्स रेस्पिरेटरी पैपिलोमेटोसिस हो सकता है, वो भी मॉर्बिडिटी पेशेंट का इंक्रीज करता है. So these monovalent vaccines, they do have the ability to prevent that. Anything else? So in the end, I would like to say that कि आपको जितने भी सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं बाद में देखेंगे, उन सभी को एक काम बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है. अपने बच्चियों को, जितने भी बच्चियां हैं उन सबको एक बहुत बड़ी गिफ्ट देनी है कि उसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र के बीच में ही 2 डोसेज लगवा दें. दिस वुड बी अ बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, क्योंकि उसको लाइफ लॉन्ग सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा. दूसरी चीज मैं कहूंगी कि उससे ज्यादा एज भी हो गई है तब भी लगवाएं, और आप सभी महिलाएं रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, जो कि बहुत सिंपल तरीका होता है. जैसा डॉक्टर मेघा ने भी बार बार बताया कि स्क्रीनिंग में एक पेप स्मीयर से स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें कि हम केवल जैसे हम एग्जामिन करते हैं आपको लिटा के, उतनी ही देर में पेप स्मीयर भी हो जाता है
और उतनी ही देर में सारी स्क्रीनिंग हो जाती है। जो भी हम करते हैं स्क्रीनिंग, HPV DNA वायरस और लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी, सभी मतलब स्क्रीनिंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। बहुत 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। तो इससे हम इतने बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वॉट्स, एनल कैंसर एंड ओरल कैंसर, ये सब कैंसर्स नहीं होंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी स्क्रीनिंग कराएं और सभी जिस भी एज में अकॉर्डिंगली अपना अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।